गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Hari Om. Let there be peace, let there be peace and love amongst all the human beings of the universe. Let there be peace. Om Shanti Shanti Shanti. We have started the contemplation on the chapter number 1, that is the rejection of Sri Rama. Sri Rama Nirved. There are 5 topics in this chapter. First topic is Bharadwaj Prashna. The question of Bharadwaj. Now this Bharadwaj Rishi is asking the question to Valmiki Rishi, and he is asking that during this mundane existence, how this Rama has behaved. That is what is the question of Bharadwaj Rishi, which he is asking to Valmiki. And Valmiki is without answering that, he is answering the question by telling there are 2 types of vasana. One is the vasana which is Janma Vinashini, that means Shuddha Vasana, which destroys the coming and going phenomena in this world, which is called as death and birth. So that is a Shuddha Vasana. So he is longing for the absolute, is a must. He wants to know what is this infinity, what is this divinity, what is this truth. That is a Shuddha Vasana. It is also a Vasana only because whether you like it or not, whether you know it or not, whether you want it or not, you are divine. अपने को पता ही नहीं कि अपन डिवाइन है, अपन खुद को डेविल समझ बैठते हैं और संसार में ड्यूअलिटी से घूमते रहते हैं. That is अशुद्ध वासना. What is अशुद्ध वासना? Where individuality is very strong. Everything is happening because of I. So these are basically lingering thoughts. जैसा कि अपन बोलते हैं कि गार्लिक कोई की पेस्ट कोई कटोरी में होगी, so that smell remains even though you clean that garlic. After using garlic paste, even if you use, that smell remains. Similarly, these vasanas remains. So why not to keep a Shuddha Vasana? So that's what has been said here. And when second topic is Vishwamitra Agaman, the arrival of Vishwamitra is there at Dashratha's palace, and Vishwamitra is asking for the help from Dashratha to relieve Rama and Lakshmana for the protection of Yagyas from the demons, Rakshasas. And whereas this Dashratha is trying to tell him, they are the very young guys, how can you do that? But at the same time, the servant of Rama comes and he says, the Rama is Durmana, melancholy. He is frustrated and dejected after he came from pilgrimage. And he is not talking to the people. He started only taking half the food. He is remaining alone. That means he is totally in a depression and dejection mode. Same time Rama comes. Before the Rama comes, Vasishtha Rishi says the solution of this. And in fact, there is no need to read the essence of Yogavaasishtha also, if we really understand the meaning of his solution. He says, this delusion is wiped off by proper reasoning. अपन ने proper समझदारी से proper इंक्वायरी कर दी तो क्या हो जाएगा? He will certainly attain peace. ये एकदम निश्चित है. ध्रुवम विश्रांतिम एष्यासि ध्रुवम, 100% उसको मिल जाएगा. प्रॉपर रीजनिंग करना पड़ेगा. तो क्या करना पड़ेगा? शांत बैठना पड़ेगा, उसके लिए रीजनिंग करना पड़ेगा. और उतने में राम आते हैं तो वशिष्ठ ऋषि राम को पूछते कि भाई आपका क्या प्रॉब्लम है? So the Ram start telling the problem in third topic, that is जीवितम दुक्खम. And first is life is full of sorrow. तो यहाँ पे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयरम. तो राम बता रहे हैं ये तो पूरा जीवन ही ऐसा है. So that is the first problem he told in the topic number 3. Second problem he told is in the topic number 4, Yogavaasishtha dukkha, stages of life are painful. He is seeing that people are growing old, they are suffering because of Adi Vyadhi. Adi is the suffering because of the Devi Apada, and Vyadhi is because of the bodily thing. Adi Vyadhi, they are suffering. So I don't like this. And third thing he said is in the fifth topic, that is Kala Vaibhavam, the might of time. Everything is gulped by the might of time. सब कुछ वो समय खा लेता है. क्या क्या खाता है? Mountains खाता है,
समुद्र खाता है, स्टार्स खाता है, सब कुछ खाता है, यहाँ तक कि पोल स्टार खाता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है जीवन में, और हम सफर होते रहते, और हमको लगता है कि हम कितने होशियार हैं, पर नहीं, वो समय के अधीन है। तो 3 प्रॉब्लम राम ने बताया। कौन से? पहला है सब कुछ समय के अधीन है, सेकंड सब कुछ दुखमय है, सब कुछ painful है. So again repeat that in English. Life is full of sorrow. Life is stages of life are painful, and third is the time of might of time. These are also the problems in the mind of every individual who is living being, as a human being, as a maybe a man or a woman. So further Rama says calamity comes in a moment, good fortune comes in another moment. What is this? ये तो मेरे को समझ ही नहीं रहा है. So I don't want to stay in this life. But then he has understood that Vasishtha Rishi must be knowing the solution. He just prayed in revered, sir, how did the wise one verily attain the state of wisdom from this sorrow? ये जो wise लोग रहते, यथा जानासि भगवन तथा मोहन निवृत्त थे. ये लोग निवृत्ति से कैसे थे? ब्रूहि में साधवो ये न्यूनम निर दुखताम गताम, ये कैसे निकलते हैं? मेरे को बताइए. टेल मी दिस as you are aware of this, so that delusion may come to. मेरा भी delusion चले जाए. पर उससे फिर से तुरंत अहंकार आता है उसमें. वो बोलता है कि however if you cannot tell me, because now my mind is totally free of desire, I am egoless. जो egoless होगा तो ऐसे बोलेगा ही नहीं. वो बोलता है अगर ऐसे आप बता नहीं सकेंगे या आप मेरे को समझा के नहीं बता सकेंगे, तो then I have decided to die. जो डिसाइड करता है अपनी मर्जी से डाय बगैर सुने, that means how much ego must be there. So I shall remain in silence as one place till the death comes. मैं वो तालाब के समान खुद को सुखा लूंगा और खत्म हो जाऊं. So this is ego. So Vasishtha Rishi just smiles for whatever the things he has said. He is going to tell us the solution in second chapter. But before that, Vasishtha Rishi has started this chapter very nicely. What he said is salutation to the truth principle. सत्यात्मने नमः. वो ट्रूथ प्रिंसिपल को हम सैल्यूट करते हैं, जो प्रिंसिपल वशिष्ठ ऋषि के भी हृदय में है, उसको पहले सैल्यूट करते हैं. वो ऑल परवेडिंग सॉल्यूशन है. और कैसा है वो? फुल, ये योग वशिष्ठ इज फुल ऑफ स्टोरीज. These all stories are extremely pious, and listen to the stories which will lead us to the liberation from this relative world. ये जो रिलेटिव वर्ल्ड में राम को दिख रहा था, सब दुखमय है, सब पेनफुल है और सब समय के अधीन है, इसमें से मन निकल जाएगा. तो कैसे क्या हो जाएगा? इसका पर्पस ही है लिबरेशन फ्रॉम रिलेटिव एग्जिस्टेंस. अपन ये रिलेटिव एग्जिस्टेंस से लिबरेट हो जाएंगे. तो कैसे होंगे? उन्होंने राम से बात करने के पहले ही बता दिया था. क्या करना पड़ेगा? जीवन समझदारी से जीना पड़ेगा, डिविनिटी से जीना पड़ेगा, प्रॉपर रीजनिंग से जीना पड़ेगा. सो व्हेन यू हैव नथिंग टू डू, व्हाट वी डू इज वी ओनली गॉसिप. बट इसमें क्या बताया है? वी हैव टू कीप आवर माइंड फोकस्ड ऑन दैट एब्सोल्यूट. अपने को शुद्ध वासना जागृत करनी है. लॉन्गिंग फॉर द एब्सोल्यूट इज अ मस्ट. सो भगवान राम वाज ईगर टू नो द वर्ल्ड, एंड ही वाज इंटरेस्टेड टू सर्व द वर्ल्ड सब्सिक्वेंटली. उसको पता करना था, इसलिए उसने ये क्वेश्चन पूछा. He knows that there are 6 types of fears in this life: जरा, मृत्यु, अशना, पिपासा, शोक एंड मोह. ये 6 चीजें सब जगत में सबको परेशान करती. जरा यानी व्याधि होती है, मृत्यु, अशना यानी हंगर, पिपासा यानी थ्रस्ट, शोक यानी सौरो, मोह यानी ग्रिड, ये चाहिए वो चाहिए. तो ये उसको पता था. ये राम को पूरा आधा अधूरा तो डेफिनेटली नॉलेज था, बट अहंकार और अपनी अंडरस्टैंडिंग पूरी प्रगल्भ नहीं हुई थी. यानी राम अपना वहां रिप्रेजेंटेटिव है. तो राम इज रिप्रेजेंटिंग अस देयर, एंड ही इज टेलिंग, रिक्वेस्टिंग वशिष्ठ ऋषि टू टेल हिम how to come out of this relative existence. So further Vasishtha Rishi says, be with everyone, but don't forget our purpose of life. अपन ये जन्म क्यों लिया है? सबके साथ रहना है, सिंपल और डिसिप्लिन लाइफ जीवन जीना है. बट वो जीते जीते हर वक्त याद रखना है कि we are here for a cause. We are here for that divinity to express through our life. That divinity has to express through our life, and we have to, in fact, that divinity, that Almighty is just waiting. He is waiting patiently whether this person allows us to manifest or not. But what we are doing, we are either giving lecture like what I am giving with the ego. We have to give the lecture with a surrenderful attitude, not with ego. भगवान करवा रहे हैं, हमारे में क्या ताकत है. We are not going to be miserable under any condition. अपने को मन को बताना है कि हम कभी भी मिजरेबल नहीं होंगे. फर्स्ट चैप्टर का और उसका एक है लर्न 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 टिल यू डिस्कवर दैट यू आर डिवाइन.
till you discover the ultimate happiness. Discover happiness. One desire is alone to make best of the man to be worthless. So एक ही डिजायर अपने को खत्म कर सकती है. तो वो सब सोच के रखना पड़ेगा. होल्ड ऑन योर माइंड इन आवर लविंग हार्ट. अपने को अपने माइंड को अपने लविंग हार्ट में सोच के रखना है कि वहां पे अपने इष्ट देवत बैठे और अपने इष्ट देवत का अपने को वहां पे चिंतन करना है. और फाइनली क्या अपने को सोचना है? श्लोक नंबर 32 में आता है, ओनली दोज थिंग्स आर बॉर्न विद द वर्ल्ड विद नोबल लाइफ हु आर नॉट बॉर्न अगेन हियर. यहाँ बॉर्न हुए फिर से अपने को जन्म नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो अपन फिर से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जो भज गोविंदम में आता है, चरपट पंचमी का स्तोत्रम में वैसे होता रहेगा और कोई फायदा नहीं. अपन विवेकहीन जीवन जग के अपन अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे. सो थिंक ऑफ दिस, रिफ्लेक्ट, रियलाइज दैट वर्ल्ड इज nothing but a meaningless mirage and we are just living in a dream world. So die in such a manner that you don't have to die again and again. ऐसे मृत्यु आना चाहिए कि फिर से मरने की कोई नौबत ही नहीं आएगी. So all problems are basically because of the monster called as ego, monster called as desire. The desire brings us ego in our life. So we have to always remain in this relative world, but always remember the absolute. That is going to be told now in the second chapter, that is the beginning of the teaching. So this video is basically a complete summary of all 1 to 69 shlokas of chapter number 1. Whoever reads this, definitely his mind will become calm. And always remember this Kal Chakra, time is a confusing factor. Time can confuse anybody. So if you want to protect yourself from an array of questions somebody is asking, always say that I don't know. So don't react, don't give any comments to anyone, no suggestions to anyone. Then you will be always at peace. With this, a summary of first chapter is over. We'll be beginning the beginning of the teaching, chapter 2, which Vasishtha Rishi is going to answer all the 3 questions of Rama. What are those questions again? Life is painful, life is sorrowful, and life is at the might of time. These problems are with all the people. Let us see how Vasishtha Rishi solved this problem for the betterment of the humanity. With this prayers. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tatsat. Shri Ramachandra Arpanamastu. Submitting the divine fruits to the Holy Spirit.